Hi friends, the Nvidia stock has jumped from $400 billion in 2022 to $1970 billion just 2 years later. The entire high-end computing industry has been transformed by Nvidia and its accelerated computing. The era of human programming is over. Now generative AI will do the programming as per your instructions and as per your language. Will generative AI replace humans? No. Artificial intelligence will not replace humans in any way. It will only replace the backbreaking programming work that 20 million humans called developers used to do, and that was a very time consuming and difficult operation for the human race. So you will be still sitting in the driver's seat, developing all the IoT and all the robotics and all the blockchain and the telehealth solutions and all other innovative technologies for future living. Only the programming part will be taken over by artificial intelligence. Let us understand how computation was reinvented before going to understand how the domains will require humans to solve their problems still. The era of general purpose computing through the central processing unit lasted over 60 years. It started with the IBM 360, and Nvidia's founder Jensen says that the Nvidia GPU provides accelerated solution based on computing, and it dominated the gaming industry for more than a decade, and now it is ready to take over the world. Enter ChatGPT, powered again by Nvidia's chips. So what is the difference? The difference is that the CPU that started in the early 60s had programmers writing code and developing solutions and testing them to check if they worked. In the case of GPU, the solution is provided to the computer and the AI works backwards from the provided data, and seeing the database, it creates a program that is needed, which is much more energy efficient and much more cost effective. Importantly, Nvidia's GPUs are more flexible to do all other applications, including gaming. So gaming is not the only field where Nvidia's GPUs are available. Over the last decade, Nvidia's focus has shifted from PC graphics to AI-based solutions, and it supports the high-end performance computing, augmented virtual reality, bioscience, aerospace, and every other industry. Its graphic processing unit that initially helped the gaming industry for 30 long years has now found over a dozen applications, and it is bound to grow in the oncoming future. It has now transformed and is helping the top technology products like supercomputers, robotics, drug discovery, self-driving vehicles. And Jensen the founder, says it is there in every cloud and in every industry. Hear him out. $1 million. And now you could build something like a large language model like a ChatGPT for something like $10, $20 million. That's really, really affordable. And so I think the ability for every industry to create their foundation model, there's going to be a protein foundation model, a chemical foundation model, there will be a robotics foundation model, there'll be foundation models for science, for finance, for all kinds of different applications in different industries and different countries. I was just in Sweden, and the Berzelius supercomputer there we helped them with. We built an AS supercomputer. It's a Swedish foundation model supercomputer, and with just tens of millions of dollars, you can build the most powerful supercomputer in Sweden. And so these are really, really accessible technologies now. There are always skeptics and people who are alarmed, perhaps, by how fast AI is taking off and how powerful it's become with capabilities like deep fakes, fake eye contact, for instance, that I've seen an example of. What do you say to them? Well, the first thing that everybody should do is
to take advantage of the technology and to boost their own capability. There's no question that the interest behind ChatGPT has been so great. It is the fastest growing application in the world, and it's been used in all kinds of different ways. The thing that's really amazing about artificial intelligence is that what ChatGPT has shown is that it has eliminated the digital and the technology divide. Everyone is a programmer now. Everybody could program a computer. During my generation, the way that you program a computer was started with BASIC, and I learned Fortran, then you learned C, and then you moved to C++ and Java, and now PyTorch or Python. And each one of those languages, there was awk, and these are really weird languages, and they're hard to learn. And the whole time that we've been making computers more and more capable, the technology became harder and harder to use, and the technology divide arguably has been growing until artificial intelligence. And you hear about cucumber farmers who are teaching a robot how to sort cucumbers. And a high school student did that for his mom. And now 150 million people are programming the computer. Instead of programming the computer with C or Python, you're now programming the computer with anybody's plain language. And you tell this computer what you want to do, and this computer goes off and does it. Or you tell the computer you like to write a Python script, and it goes off and does it. And so this capability has democratized computing for the very first time. It's put technology, very powerful technology, in the hands of anybody who would like to use it. And so I think this is really genuinely the first time in my generation that we've created something or contributed to created something that made our technology accessible to everyone. Not just to use, but to harness. Not just to use, but to program. So, programming will no longer be needed to handle technology. That part will be taken care of by AI. Humans will instead need to understand what technology does, how it evolved over time, the applications, the diverse streams of technology, the history, the use cases, and how it meets the human needs, and what it will do in the future. Without human intelligence, AI cannot solve problems to help humans, nor can it create threats or danger for humans. We are still a decade or two away from the AI that can think on its own. Today, it can only solve a given problem and a digital problem if provided with a database. Also, AI cannot solve any physical problem or do any physical work which humans can do. For example, it cannot plow the soil without a digitized lawnmower. It can't water the plants without a digitized sprinkler. It cannot harvest without a digitized harvester. It cannot cook food without a robotic chef. And it cannot do many things which humans can do just simply. So basically, it cannot do any physical work, and it can only do digital work when given a programmed database. So the technology and the domain we talk about in our TAL videos, which is the technology for all videos based on our book Innovative Technologies for Future Living, published by Routledge UK, is good enough for you to understand the domains and the technologies. 10 domains that include both core technologies as well as applications like AI, cryptocurrencies, edutech, metaworld, or any other. And we talk about AI and the business analytics, for example. So we are talking about technology, we are not talking about programming, which is not needed any longer. So learn technology with us, like we talked about business analytics, the descriptive analytics 2 weeks back, then the diagnostic analysis, and then the predictive analytics. And next week we will talk about the prescriptive. So this is how we will explain to you how technology performs, and that is what you need to understand, and not programming anymore. Now we will go over to our Hindi section. See you next time. Bye. एक नंबर है, उसके बारे में सुना ही हो। 2022 के बाद एनवीडिया का शेयर प्राइस एकदम से छलांग मारा
उसका मार्केट कैप जो $400 बिलियन था, वो 2 साल के अंदर $1970 बिलियन हो गया और वो दुनिया का चौथा बड़ा कंपनी हो गया। अब ये कैसा हुआ? अब ये चिप मेकर ने वही चिप बनाया जो कि आज के दिन में चैट जीपीटी और ओपन एआई के सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। तो वो कहता है क्या इंसानों के द्वारा प्रोग्रामिंग का वक्त अब खत्म हो गया। एनवीडिया का जनरेटिव एआई अब प्रोग्रामिंग करेगा आपके हिसाब से और आपके भाषा में। तो क्या ये जनरेटिव एआई इंसान को रिप्लेस कर देगा? नहीं, ये कभी नहीं। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को आज के दिन रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करेगा, जो कि कोडिंग है, जो कि बहुत मुश्किल से होता है और दुनिया में 2 करोड़ डेवलपर्स मिलके इसको कोडिंग करते हैं। पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कोडिंग कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए इंसान हमेशा रहेगा। और चाहे वो आईओटी हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे टेली हेल्थ हो, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग इंसान का ही रहेगा। पहले हमें समझने दीजिए क्या कंप्यूटेशन को एनवीडिया ने कैसे नया तरह से मोड़ दिया। अब ऐसा है, 1960 में आईबीएम 360 जब कंप्यूटर आया तो वो सबसे पहले सीपीयू जो है वो था जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन, जो कि सारे चीज का कंप्यूटेशन कर सकता था, सारी चीज का प्रोग्रामिंग। एनवीडिया ने 10-15 साल पहले जो अपना जीपीयू लाया वो सिर्फ एक्सीलरेटेड प्रोग्रामिंग करता था एक सब्जेक्ट। तो एनवीडिया ने सबसे पहले गेमिंग के ऊपर एप्लीकेशन उसके बनाए और करीब 10-15 साल तक वो गेमिंग इंडस्ट्री में छा गया। उसके बाद उसने दूसरी इंडस्ट्रीज में आया और आज के दिन में वो करीब 1 दर्जन इंडस्ट्री में छा गया है। तो अंतर क्या है सीपीयू और जीपीयू में? सीपीयू जो है वो इंसान उसमें प्रोग्राम करता है और इंसान को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो कोड लिखता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करता है या वो कोड ठीक से चल रहा है या नहीं, सोल्यूशन आया या नहीं। जीपीयू में दूसरा चीज है। जीपीयू में क्या होता है, सोल्यूशन दिया जाता है और वो सोल्यूशन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड लिखता है। तो ऑब्वियसली वो जो कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखता है वो एनर्जी एफिशिएंट भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है, वो फास्टर होता है, क्योंकि वो तो सोल्यूशन से वो क्वेश्चन लिख रहा है। तो ये बहुत आसान होता है। It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And it's the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Because for the very first time, you can imagine everybody in your company being a technologist. And so this is a tremendous time for all of you to realize that the technology divide has been closed. Or another way to say it, the technology leadership of other countries has now been reset. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do, to help automate your work, to amplify your productivity, to make you more efficient. And so I think that this is just a tremendous time. The impact, of course, is great.
and your imperative to activate and take advantage of the technology is absolutely immediate. And also to realize that to engage AI is a lot easier now than at any time in the history of computing. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising, to realize that this computer can perform all these things that you're instructing it to do and do. तो आप लोगों ने जेंसन ह्यूआंग जो कि एनवीडिया का फाउंडर है उनका वार्ता सुना ही होगा। अभी वो बता रहे हैं, मैं नहीं, कि आप प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होगी आपको टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। एआई वो पोर्शन करेगा और इंसान को बस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे चलता है और टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुआ और अभी वो कैसे चलता है, उसके कितने भाग हैं और उसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, और उसके बारे में जानना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में, ना कि प्रोग्रामिंग के बारे में। कोई भी प्रोग्राम की कोई भी प्रॉब्लम ह्यूमंस ही सॉल्व कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में नहीं। वैसे ही कोई भी बाधा विपत्ति वगैरह इंसान ही दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अभी इतना क्षमता नहीं है जो कि वो इंसान जैसे सोचे। वो सिर्फ डेटाबेस दे दोगे तो वो प्रोग्रामिंग करके आपको इंसान से अच्छा प्रोग्रामिंग करके दे देगा। पर क्या है, क्या वो जो काम करता है उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करें और उससे डरे ना। दूसरी बात क्या है कि कोई भी फिजिकल काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर नहीं सकता है। जैसे कि हल चलाना, हल वो चला नहीं सकता, उसके पास अगर डिजिटाइज्ड हार्वेस्टर है, डिजिटाइज्ड ट्रैक्टर से तभी वो कर सकता है। वो पौधे में पानी नहीं दे सकता है अनलेस उसके पास स्प्रिंकलर है या ऐसे सिस्टम है। इंसान जो कि दे सकता है, कोई भी चीज़ उठा के पानी दे सकता है, और सारे काम जो है जो इंसान कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर नहीं सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई फिजिकली काम करने का कोई जुगाड़ी नहीं है। उसको ये था रोबोट चाहिए, अगर उसे खाना पकाना है तो अच्छा शेफ रोबोट चाहिए, अगर उसको कोई दूसरा काम करना है उसके लिए दूसरा रोबोट चाहिए, तो वो खुद अपने से कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इंसान को उससे इतना घबराना भी नहीं चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी डोमेन हम जो आज के दिन में बात कर रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी फॉर ऑल वीडियोस का जो कि हमारा किताब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर लिविंग जो राउटलेट द्वारा प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से है, तो उसमें 10 टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो कि उसके डोमेन के बारे में बताया गया, वो कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया गया। यही हमें सीखने की ज़रूरत है, ना कि प्रोग्रामिंग का। और अगर आप देखेंगे तो हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे कि 2 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, फिर हमने बताया उसमें डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है, फिर हमने बताया उसमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, आगे हम बताएंगे उसका प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। तो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ हम बताएंगे आपको, आप देखते रहिएगा। और अभी हमें आज्ञा दीजिए, हम आपको अगले वीडियो अगले हफ्ते ही मिलेंगे। धन्यवाद।